once again and welcome back to this crypto mastery course. We are at module 6 now, and um, by now you've finished 5 of the other modules of this crypto mastery course. I hope those are going well for you. Today's module is again a very important one, um, and we are going to be talking about what Bitcoin dominance is, um, how to see trades and in what pairs, because usually लोग USDT pair में देखते हैं whatever coin that they're looking at. um, तो उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होगा, मैं आपको वो समझाऊंगा कि किन पेयर्स के अंदर देखना चाहिए किसी भी कॉइन को. एंड यू कैन सी हाउ इट्स परफॉर्म बाय लुकिंग एट डाटा in the past cycles. Again, DDE, data determines everything. Then we will talk about what the CME gap is, and finally, we will talk about stocks and DXY. Let's just first talk about Bitcoin dominance and what exactly it is, because this is a term that will be used by a lot of traders um, throughout the bull market and even before the bull market. They will say things like, the Bitcoin dominance is now at resistance, और Bitcoin की जो dominance है उससे क्या effect पड़ता है बाकी coins के ऊपर. We will be talking about that, and once you learn this, you will understand how money rotates into other coins and how you can take advantage of that by understanding and knowing the Bitcoin dominance chart. So again, please, throughout the lecture, if you're confused about anything, go back to it and watch this lecture in one go. So now I'm going to open the Bitcoin dominance chart, BTC.T. So I've now opened the Bitcoin dominance chart. Okay. अब Bitcoin dominance chart basically ये होता है कि कोई भी क्रिप्टो मार्केट, कोई भी मार्केट हो, बेशक वो स्टॉक्स हों या कोई भी कमोडिटी हो, उसका एक मार्केट कैप होता है. अम, आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए मार्केट कैप बेसिकली ये बताता है कि कितने पैसे एक सर्टेन कमोडिटी या एसेट के अंदर इन्वेस्ट हुए हैं. ठीक है. एंड यू कैन फाइंड दिस आउट बाय अ सिंपल गूगल सर्च. इफ़ यू गो ऑन गूगल, whenever you look at this module, you'd go and type BTC market cap and sorry, BTC market cap, and it would tell you that right now the current market cap of Bitcoin is 569.69 billion dollars. Okay, so as of now इतने पैसे बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट हुए हैं. अब दूसरी जो चीज़ आपने सर्च करनी है, वो आपने सर्च करना है ओवरऑल crypto market cap, right? So what is the overall crypto market cap as of uh, today? So that is about 1.25 trillion dollars. Okay, and we see that the Bitcoin dominance right now is at 49%. So that means out of the 1.25 ट्रिलियन डॉलर्स, उसमें से तकरीबन 50% जो डॉलर्स हैं वो बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टेड हैं. एंड दैट्स व्हाट मेक्स द बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट. सो आई होप दैट हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट बिटकॉइन डोमिनेंस इज़. और ये जब मैं आपको आगे थोड़ी चीज़ें समझाऊंगा तो आपको और क्लियरली पता चल जाएगा व्हेन वी लुक एट डाटा हाउ एंड व्हेन to look at the Bitcoin dominance chart. And then also we will talk about pairs कि pairs के अंदर किस तरह होते हैं once I talk about the Bitcoin dominance chart. So for example, अगर overall crypto market के अंदर इस वक्त 100 रुपीज़ इन्वेस्टेड हैं, so overall crypto market का मतलब है कि Bitcoin and then all other coins are called altcoins. Ethereum, Cardano, whatever coins there are, I think there are about 19,000 cryptocurrencies. उन सब को आप कहेंगे कि वो alt coins है.
ओके, तो अगर ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में 100 रुपये इन्वेस्टेड हैं, तो बिटकॉइन डोमिनेंस अगर 49% पे, इसका मतलब है 49 रुपीज़ बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टेड है, 49.86, और बाकी पैसे जो हैं वो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर है. नाउ कमिंग बैक टू द सेम थिंग दैट आई हैव ऑलवेज मेंशन टू यू, डाटा डिटरमिन्स एवरीथिंग. हमेशा ये हुआ है कि जब जब हमारी बेयर मार्केट स्टार्ट हुई है, और लोगों ने एक्यूमुलेशन फेज में गए हैं, तो you will see that the Bitcoin dominance in June 2023 was at 52%, and over here it's at 52% as well. But if we look at the HTF higher time frames पे देखें, HTF पे अगर हम Bitcoin dominance को देखें, um, this isn't correct. There should be more to it than this. Um let's see here. Let's see if we can open the chart. Bitcoin dominance right here. Look at the daily chart. There we go. So if we open the daily chart, again we always look at data on HTF, because मुझे याद था कि Bitcoin dominance ज़्यादा ऊपर जाती है. तो अगर हम देखें इन एरियाज के अंदर, DDE data determines everything, और ये मैंने रेंजेस इस वजह से बनाई है बिकॉज सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड्स इस पे भी काम करते हैं. सो वी हैव डाटा फ्रॉम 2018 all the way till 2023. So we see that 2016 के अंदर 16 के अंदर बेयर मार्केट जब आई थी ये वाली, तो बिटकॉइन डोमिनेंस बिल्कुल नीचे थी. इसका मतलब था कि ज़्यादा जो आपके पैसे पड़े थे वो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर थे. ठीक है, और जब ऑल्ट कॉइन से पैसे निकले और आपकी जब एक्यूमुलेशन फेज और बेयर मार्केट स्टार्ट हुई, तो द मनी स्टार्टेड फ्लोइंग बैक इनटू बिटकॉइन. सो व्हाट हैपेंस इज, बुल मार्केट के अंदर एक सर्टन लेवल पे पहुंचते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस, और उधर से रिजेक्ट होती है, एंड देन आहिस्ता 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 करते करते बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरना शुरू हो जाती है. और जब डोमिनेंस गिरती है तो ऑब्वियसली पैसे फ्लो करते हैं फ्रॉम BTC इनटू ऑल्ट कॉइन्स. सो काफ़ी दफ़ा इस तरह हुआ है. एट इट्स पीक in 2019 and then in 2021, when the bull market started, the Bitcoin dominance was at 74%. मतलब अगर 100 रुपये इन्वेस्टेड थे पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर, तो 74 rupees were in Bitcoin. And you see that eventually Bitcoin dominance came all the way down to 39% where prior support was. Okay, और फिर जब आपकी 2022 के अंदर बेयर मार्केट स्टार्ट हुई, बिटकॉइन डोमिनेंस वेंट फ्रॉम 39% and it's now started going back up again, and it's around 50% again. So ये हम expect कर सकते हैं that sometime in the future, I am assuming around September and October, when the final crash happens, according to data and statistics, we might see the Bitcoin dominance going back up again. And then जब आपको मैंने बताया था हैविंग साइकिल होगी, उसके चंद हफ्तों बाद Bitcoin dominance नीचे आना शुरू हो जाएगी, and then obviously your alts will start to rally. So now once the Bitcoin dominance comes down, for example अगर ये फ्यूचर में इधर से ऊपर चली जाती है right here, and we are starting a new cycle and it starts to come down, we want to identify कि कौन से coins के अंदर ये flow करेंगे पैसे from Bitcoin. Obviously अगर 74 से 50 तक आती, तो there's a drop of about 30%. तो फ़र्ज़ करें अगर 100 रुपीज़ है हमारे पास और 70 रुपीज़ बिटकॉइन के अंदर है, देन द बिटकॉइन डोमिनेंस गोज ऑल द वे डाउन टू 40. इसका मतलब है 30 रुपीज़ और कॉइन्स के अंदर जाएंगे, और वो अमूमी तौर पे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जाते हैं, और हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं बाय लुकिंग एट द कॉइन इन द BTC पेयर एंड देन द ETH पेयर. यूजुअली हम करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं,
INJ कॉइन, एक कॉइन है विच आई रियली लाइक। INJ को देखेंगे तो हम USDT पेयर के अंदर उसको देखते हैं। सो दिस इज़ व्हाट INJ हैज़ बीन डूइंग ऑन द let me open a clear chart so you guys can see clearly. And again, अगर आपको किसी जगह पे confusion हो, you can always go back and look at it again. um, INJ we can probably look at on Bybit here. So you see how we're looking at INJ on the USDT pair, but to see a coin's performance during times of dumps or times of recovery, you need to see कि कौन सा coin सबसे पहले recover अच्छा करता है against Bitcoin, क्योंकि अगर वो Bitcoin के पेयर के ऊपर recover करे, that means it's a really good coin. So if we open INJ in the BTC pair right here, we can see that since March of 2000, actually since January of 2023, when the market correction ended right from here, इस जगह से INJ has constantly been making higher highs and higher lows up till here, and it's been outperforming Bitcoin. So इसी वजह से 2023 के अंदर INJ जो था वो बेस्ट परफॉर्मिंग ऑल्ट कॉइन था अगेंस्ट BTC। और आप लोगों को मैंने बताया था कि BTC अभी अपने एक्यूमुलेशन फेज के अंदर है। सो इफ़ वी गो बैक एंड लुक एट इट ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, 1 वीक, इस जगह पे हम देखेंगे BTC को, तो हम ये देख सकते हैं कि अभी भी BTC एक एक्यूमुलेशन फेज के अंदर अराउंड हेयर। तो अगर एक्यूमुलेशन फेज के अंदर INJ जो बेस्ट परफॉर्मिंग कॉइन था, विच आई थिंक इज गोइंग टू डू रियली वेल in the next cycle, if it has been performing against BTC well, that means it's going to do well in the bull market as well, when the bull market comes, right? So you can chart it this way as well. And then secondly, आपको INJ को या किसी भी कॉइन को ETH के पेयर में देखना चाहिए, how it's performing on the ETH pair. INJ ETH होना चाहिए, ETH, कुछ का होता है कुछ का नहीं होता। So yeah, ये रहा on the Ethereum pair right here. So you see how it's outperforming both Ethereum and Bitcoin. So ये जब आप देखेंगे कभी कभी USDT के पेयर में प्राइस साइडवेज जा रही होगी, लेकिन आप BTC का पेयर देखेंगे तो BTC के पेयर में कॉइन जो है वो ऐसे जा रहा होगा, एंड देन इवेंचुअली दैट विल फॉलो। अगर BTC और ETH के पेयर में उसको आउट परफॉर्म करे तो there is a good chance that the coin will pump in the USDT pair also. So it's always good to check coins on BTC and ETH pair, whatever coin that you like or whatever coin you research और आपको लगता है कि ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है अगली साइकिल के अंदर। ओके, सो नाउ वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक विच अ लॉट ऑफ पीपल आस्क, और वो ये पूछते हैं कि ये CME गैप क्या होता है। तो इसको आसान लफ्ज़ों में बताने के लिए आपको मैं ये बता दूं कि CME गैप बेसिकली स्टैंड्स फॉर शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज। ओके, दैट्स व्हाट द CME गैप इज़। और उसमें टोटल जो चीज़ होती है, लोग इसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं, लेकिन इसमें जो टोटल एक चीज़ होती है वो ये होती है कि शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज इज़ बेसिकली लाइक एन एक्सचेंज फॉर स्टॉक्स, इसके अंदर मुख्तलिफ स्टॉक्स की प्राइसेस होती हैं, एंड इट गोज़ फ्रॉम वर्क्स फ्रॉम मंडे एंड क्लोजेज ऑन फ्राइडे। सैटरडे संडे ऑफ होते हैं एंड देन opens back up on Monday, kind of like how regular stock markets do in and around the world. So let's say for example, अगर BTC की प्राइस मंडे को 1 रुपी है और फ्राइडे को वो 5 रुपीज़ तक चला जाता है, तो जो शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज है, क्योंकि मंडे से फ्राइडे तक काम करती है, वो उसको ये पता होगा अकॉर्डिंग टू द एक्सचेंज कि 5 रुपीज़ BTC की प्राइस थी फ्राइडे नाइट की क्लोजिंग पे।
अब अगर क्योंकि बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट तो वर्क 24/7, अगर फॉर एग्जांपल सैटरडे को वो $6 पे चला जाता है और संडे को $7 पे चला जाता है, आई एम मेकिंग वंडरफुल ड्राइंग्स, $7 पे चला जाता है, तो जब मंडे को जब शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज खुलेगी, उसको पता है कि हमने $5 तक देखा था ऑन फ्राइडे। अब ये 6 और 7 पे जो चला गया है, तो ये जो सारा बीच में 6 और 7 का एरिया होगा, $6-7 की प्राइस का, ये बेसिकली एक गैप बन जाएगा। एंड व्हाट हैपेंस इज, इफ लेट्स से फॉर एग्जांपल द प्राइस क्लोज ओवर हियर ऑन फ्राइडे फॉर बीटीसी एंड सैटरडे संडे को वो इस जगह पे आ जाती है, तो ये वाली जो सारी जगह है, ये आपका बन जाएगा CME गैप. This can happen towards the upside and can happen towards the downside also. For example, अगर मंडे को उसकी प्राइस BTC की $1 है और फ्राइडे को $4 है, राइट? तो फ्राइडे की क्लोजिंग के वक्त शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज को पता चलेगा जब भी क्लोज होती है फ्राइडे को कि $4 थी प्राइस. अब अगर सैटरडे को वो 3 पे चली जाती है और संडे को 2 पे चली जाती है, इसका मतलब है कि अगर ये क्लोजिंग प्राइस थी ऑन फ्राइडे और सैटरडे और संडे को इधर क्लोजिंग प्राइस है, तो ये जो बीच का एरिया है ये आपका बन गया CME गैप. दैट्स ऑल देयर टू इट इन द CME गैप. इसके अलावा आपको कुछ पता होने की ज़रूरत नहीं है, because you will just complicate things for yourself. Now, the next thing that we will talk about is called the DXY. ये आपने इसको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का हिस्सा बनाना है when you're looking at the DXY. Basically, DXY is the dollar index. ये दुनिया की 4-5 करेंसीज हैं, उसके अगेंस्ट इसकी परफॉर्मेंस दिखाते हैं डॉलर की स्ट्रेंथ की. मतलब अगर DXY के ऊपर DXY अगर नीचे जा रहे, इसका मतलब है कि जिन 5 करेंसीज के, मेरे ख्याल में यूरो एंड देयर इज लाइक 4 अदर करेंसीज, उनको देखते हैं कि परफॉर्म कैसे कर रहा है अगेंस्ट दोज. इफ the dollar is going, DXY chart is going down, that means that the dollar is losing its strength against those 4 currencies or 5 currencies. लेकिन अगर डॉलर ऊपर जा रहे, ऐसे DXY ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि जो डॉलर है उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है अगेंस्ट दोज 4 करेंसीज. और जब किसी करेंसी की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, उधर की इकॉनमी भी बेहतर होती है, इन्फ्लेशन भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने जाती है, इकॉनमी भी बेहतर होती है, इन्वेस्टर्स भी आते हैं. लेकिन जब वो नीचे जा रहे होते हैं उसकी स्ट्रेंथ अगेंस्ट बाकी करेंसीज, तो फिर जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हीं करेंसीज को प्रेफर करते हैं जिसकी स्ट्रेंथ गेन हो रही है. नाउ हाउ डज दिस कोरिलेट विद BTC? इसका सिंपल सा एक फार्मूला है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ. वो ये है कि DXY का हमेशा इनवर्स रिलेशन रहा है विद बिटकॉइन एंड द क्रिप्टो मार्केट. सो उसका जो हल है वो ये है कि इफ़ the DXY is going down, the crypto market will go up. Okay, so if the dollar is going down, the crypto market will go up. If the dollar is going up, the crypto market will go down. Opposite effect होता है. So इधर आप देख सकते हैं कि ये जब रैली हो रही थी, ये वाली DXY जब ऊपर जा रहा था, तो बिटकॉइन went from 60,000 all the way down to 15,000, and this is when the DXY was pumping. अब जब आपकी DXY नीचे गिरना शुरू हुई है, तो बिटकॉइन आपका वापस आ गया है 30,000 पे. तो आपको DXY को देखने की बहुत ज़रूरत है. इसके ऊपर भी, जिस तरह मैंने आपको पहले समझाया था, यू कैन ड्रॉ ट्रेंड लाइंस, यू कैन ड्रॉ सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल. एक जल्दी से अगर हम ट्रेंड लाइन बनाएं तो वी कैन सी दैट इट वाज फॉलोइंग दिस सर्टेन ट्रेंड, राइट? द DXY वाज फॉलोइंग अ सर्टेन ट्रेंड. ये मैंने जल्दी बनाई है, लेकिन जस्ट टू शो यू गाइस, वंस इट broke this trend, the DXY, right here the trend was broken, right here it was broken. इधर
और मैंने आपको बताया हुए वंस ए ट्रेंड इज़ ब्रोकन, जो प्रीवियस सपोर्ट होती है वो रेजिस्टेंस बन जाती है। ओके, सो जो आपकी प्रीवियस सपोर्ट थी वो रेजिस्टेंस बन गई, इसने इधर आके रीटेस्ट किया, bearish retest, went back down, came back up, and then went back down. Now we have to see where the next area of support is. Again, those areas you can always um, draw. तो इसको जो आपने याद रखना है जब आप अपना कोई चार्ट खोलें या कोई एनालिसिस करें, सी हाउ द DXY is performing for that day and whether any news has come out regarding that. Now एक चीज़ जो आपने अपने जहन में रखनी है which has a good correlation with Bitcoin, इसका तो मैंने बताया ना ऑपोजिट होता है। ये दो चीज़ें हैं, नैस्डैक एंड देन S&P 500। ये बेसिकली अमेरिका की स्टॉक मार्केट के बारे में बताती है कि अमेरिका की स्टॉक मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। सो इसका बिटकॉइन के साथ ये ताल्लुक है कि अगर ये ऊपर जाएगी तो क्रिप्टो मार्केट भी ऊपर जाएगी, अगर ये नीचे जाएगी तो क्रिप्टो मार्केट भी नीचे जाएगी। एक ये चीज़ है S&P 500 एंड देन द नैस्डैक 100। ये बेसिकली S&P 500 के ऊपर अमेरिका की टॉप 500 कंपनीज लिस्टेड हैं और वो ये सब क्यूमुलेटिव बताते हैं कि हाउ दे आर परफॉर्मिंग। एंड नैस्डैक के ऊपर जो है 100 टॉप कंपनीज हैं, जिस तरह टेस्ला हो गई, एप्पल हो गया, बिटकॉइन, वो आपको बताते हैं हाउ दे परफॉर्मिंग। अगेन यू कैन मेक ट्रेंड लाइंस ऑन दीज charts as well, whether it's a DXY, whether it's a stocks, or whether it's the crypto market, and see how these things perform. So this was it. This was your module for today. We're done with 60% of the course. Congratulations to you. Once again, if there are any confusions, please go back, watch it again. Um, और अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो लाइक ऑलवेज द डिस्कॉर्ड लिंक इज़ इन माई इंस्टाग्राम बायो। आप हमारी फ्री डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करके उधर आके कोई भी सवाल कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस कोर्स, एंड मी और my team members will be there to answer your questions. I will see you guys in module 7, and I hope this module was helpful. Take care of yourself and your families, and I will see you in the next one.